Good morning students, welcome to the next video of a complex number class. Before starting, first we start Brahmanad. शांति 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 सोचता हूँ टुडे we will discuss cube roots of unity. Last class we discussed square root and modulus of the complex number. You know square root of the complex number, that is root of z. Let z equal to a plus ib, then square root a plus ib equal to plus or minus root of mod z plus real part of z by 2 plus I times root of mod z minus real part of z by 2 if b is greater than 0. If b less than 0 means imaginary part of complex number is negative, then root of a plus ib equal to plus or minus root of mod z plus real part of z by 2 minus I into root of mod z minus real part of z by 2. Okay. So you can use this formula, or by direct you can solve the square root by taking root x plus iy. जे कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट पचारा तुम ताकू x प्लस iy नहीं स्क्वायरिंग करियो बोथ साइड तापर इक्वाटिंग रियल एंड इमेजिन पार्ट करी एक्स वाई वैल्यू बाहर करी तुम स्क्वायर रूट भी बाहर कर पारियो विथआउट टेकिंग फॉर्मूला. ओके, नाउ we discuss cube roots of unity. Cube roots of 1. What are the cube roots of 1? Let cube root of 1 equal to x. Now find its value of x. Okay. So cube root of 1 equal to x means that implied x cube equal to 1. Understand? X cube equal to 1. That implied x cube minus 1 to q equal to 0. And that implied x cube minus 1 to q, use the formula a q minus b q, a minus b into x square plus x plus 1 equal to 0. That implied x minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. That implied x equal to 1, or here x equal to minus b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a. Use this formula, that is x equal to minus 1 plus or minus root over b square means 1. Here a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1. 1 minus 1 plus or minus root over b square minus 4, a means 1, c means 1 by 2a, 2 into 1. Or x equal to minus 1 plus or minus root over 1 minus 4 minus 3 by 2, and this is minus 1 plus or minus root 3i, because root or minus 3 means root 3 into root or minus 1. So root or minus 1 equal to I, so minus 1 plus or minus root 3i by 2. So here we get three values, that is x equal to 1, that is x equal to 1, minus 1 plus root 3i by 2, and minus 1 minus root 3i by 2. Okay. So therefore cube root of 1 equal to minus 1 minus 1 plus root 3i by 2, and other is minus 1 minus root 3i by 2. Okay. So cube root means you have got 3 roots. So out of 3 roots, one is a real root and these 2 roots are complex root.
These two roots are complex root. And what are the properties of cube roots? Okay, complex root is minus 1 plus root 3 I by 2. Other is minus 1 minus root 3 I by 2. Clearly, minus 1 minus root 3 I by 2 is the conjugate of minus 1 plus root 3 I by 2, and also minus 1 plus root 3 I by 2 is the conjugate of this one. So, complex root are conjugate to each other. Okay, complex root are conjugate to each other. If we take square of one complex root, if minus 1 plus root 3I by 2 the whole square, what will be square of this one? Equal to 1 by 4 into, here use this formula a plus b the whole square, a square plus b square root 3 the square into I square, and this is minus 3 because root 3 square 3, I square means minus 1, so minus 3, a square plus b square plus 2ab, 2a means minus 1, b means root 3I, so minus 2 root 3I. Okay, and 1 minus 3, this is minus 2 into root 3I by 4. Take it common 2, so 2 da common hale minus 1 minus root 3I by 4, and this is 2. So minus 1 minus root 3I by 2. So square of minus 1 plus root 3I by 2 equal to minus 1 minus root 3I by 2. Similarly, if we get square of minus 1 plus minus root 3I by 2, we will get this one. देखो बोले यार स्क्वायर कले एतिके आसीबो, आकु जदि हमें स्क्वायर करिया यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो स्क्वायर ऑफ वन कॉम्प्लेक्स रूट इज अदर कॉम्प्लेक्स रूट. ओके, आउट ऑफ 3 रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, complex root are conjugate to each other, and once again square of one complex root is other complex root. याकु स्क्वायर कले एटा आसीबो, एटा स्क्वायर कले एटा आसीबो, and this complex root are denoted by omega. Generally, complex roots of cube root unity are denoted by omega. If this one is omega, this one is omega, its symbol is W, omega, and this one is omega square. So the eta omega habo, eta omega square habo, or you can take if omega equal this one, then this one is omega square. Eta omega nale eta omega square habo. But jona pila eta omega nabol eta se house omega square habo. Okay. So finally we write the cube roots of unity are 1 omega and omega square. Okay. Also, if we add these all 3 roots, what is the answer? देखो ए 3टा रूट जो आम एड करवा या सहित एड करिया मीन्स से एलसीएम इज 2, एलसीएम इज 2, यार कौन अच्छे 2 minus 1 plus root 3i, it has here minus 1 minus root 3i. Okay, so plus root 3i minus root 3i cancel. 2 minus 2, this is 0 by 2 is also 0. So sum of cube roots of unity is 0. 3टा root to the add करिया you will get 0. If we multiply these roots, देखो a root टाक जब मैं multiply करिया 1 को या सहित a नंबर टाक a नंबर सहित multiply कले कौन हबो 1 सहित multiply कले तो 1 आसी एडा एति आसीओ ना a सहित multiply कले कौन होची. If we multiply these all roots, we will get देखो 2 into 2 के आसीओ 4 हैला. এটা কোন আছে minus 1 plus root 3i minus 1 minus root 3i, a plus b into a minus b, that is a square minus b square. तो minus root 3i रो square है. तो 1 minus root 3 रो square 3, I square means minus 1, तो plus 3 है by 4. So this is 4 by 4 equal to 1. So product of cube roots of unity is also 1. That is 1 into omega into omega square into omega square equal 1, that is omega q. 1 into omega square, this is omega q. So omega q equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. Okay. So these are the properties of cube root of unity. Now we write these things. So out of 3 roots of cube root of 1 is the real root and other 2 roots are complex. Okay.
Number 2, complex roots are conjugate to each other. Number 2, complex roots are conjugate to each other. Number 3, square of one complex root is other complex root. Square of one complex root is other complex root. Okay, complex roots are denoted by omega, and complex roots are denoted by omega and omega square. Okay, next, sum of cube roots of unity, cube roots of one unity is 0. That is 1 plus omega plus omega square equal to 0. 1 plus omega square equal to 0. Number 5, product of cube roots of unity is 1. Okay, that is 1 into omega square equal to 1. So 1 into omega square equal to 1 means omega q equal to 1. So finally we write cube root of 1 equal to 1 into omega square. Okay, these are the properties. So 1 plus omega square equal to 0 and omega q equal to 1. If omega q equal to 1, and you know any power of 1 is also 1, so omega q to the power n equal to 1 to the power n equal to 1. That implied omega to the power 3n equal to 1 for all n belongs to capital Z set. Okay, or n belongs to capital N. Since omega q is 1 and you know any power of 1 is also 1, that means the power of omega is multiple of 3, then its value is 1. Then omega power ta jodi 3 ro multiple hobo, it will be 1. And you know any number are divided by 3, the remainder may be 0 or 1 or 2. If remainder is 0, the number must be 3n. If remainder is 1, the number must be 3n plus 1. If remainder is 2, then the number must be 3n plus 2. तेणु जेकोसी संख्या को जदि आम 3 द्वारा डिवाइड करिया, रिमाइंडरटा 0 हो पार कि 1 हो पार कि 2 हो पार. रिमाइंडरटा 0 हेले संख्याटा 3n हम तार तो 3 मल्टीपल हम. रिमाइंडरटा 1 हेले संख्याटा कौन हम 3n प्लस 1 रहिबो. रिमाइंडरटा 2 हेले संख्याटा कौन हम 3n प्लस 2. दैट्स वाइज ओमेगा टू द पावर 3n plus 1 means omega power 3n into omega power 1. Omega power 3n 1 into omega कौन हम omega power 3n plus 2. तो omega power 3n plus 2 means omega power 3n into omega square है. So here 1 into omega square and this is omega square. For example omega to the power 7 देखो ओमेगा टू पावर 7 मीन्स तुम आपको कौन 3 रे डिवाइड करियो ना जिने आई टू पावर नंबर थिला हमें 4 रे डिवाइड करथले सिनी ओमेगार पावरटा जते बड़ हेले मध्य ताको तुमे 3 रे डिवाइड करियो. सो 3 डिवाइड कले कौन होची 3 2 6 3 into 2 plus 1 हैला ना नहीं. सो
3 into 2 into omega power 1 एटा 1 है 1 into omega equal to कौन होचे omega to the power 11 omega to power 11 means कौन करियो so 3 into 3 3 3 is 9 plus 2 रहिला plus 2 means कौन हबो so omega power 3 into 3 into omega square है this is 1 into omega square equal to omega square है okay suppose 1 by omega is not a complex number omega value कौन होची omega equal to where omega here omega equal to -1 plus root 3i by 2 if omega equal to this one then omega square will be omega square कौन होगा -1 minus root 3i by 2 okay remember this value omega equal to -1 plus root 3i by 2 omega square होची -1 minus root 3i by 2 or you can take if this one is omega then this will be omega square anyone okay so 1 by omega is a complex root but 1 by omega is not a complex root 1 by omega for to make into complex number form into a plus ib form कौन कराबो तो 1 into omega multiply कर दियो by omega square हला अच्छा एडी हमें कौन कले omega square multiply कर दियो omega square by omega square omega into omega square okay and this is omega square by omega q है ना and omega q equal to 1 तो omega square by 1 omega square है okay so 1 by omega equal to omega square or you can write directly 1 means कौन omega q by omega by omega thus this is omega square by the omega multiply कले भी हम नहीं अच्छा देखो so 1 by omega equal to omega square and 1 plus omega equal to minus omega square because 1 plus omega square equal to 0 1 plus omega होची minus omega square and 1 plus omega square equal to minus omega okay 1 by omega square so 1 by omega square means omega 1 means omega q by omega square and this is omega okay 1 by omega होची omega square 1 by omega square होची omega okay so omega रो पावरटा जदि 3 रो मल्टीपल होबो दिस विल बी 1 होबो नाइ 3 रो ग्रेटर अछि नंबरटा ताको लोअर नंबर रे कन्वर्ट करिया पे तमे 3 रे डिवाइड करी रिमाइंडरटा केते होछि देखियो जदि रिमाइंडरटा 0 होबो दिस इज 1 होबो रिमाइंडरटा 1 हेले ओमेगा वैल्यू पड़ियो रिमाइंडरटा 2 हेले ओमेगा स्क्वायर पड़ियो ओके so these are the properties of cube roots of unity and how can you express omega into omega any power of omega into omega square and 1 okay next if we ask what are the cube root of 25 now we find cube root of 25 or cube root of 27 or cube root of any non-zero real number okay find the cube roots of 125 comma minus 27 and 5 है ना so यार cube root हमें केमती कैलकुलेशन करा हम देखो आंसर number 1 cube roots of 125 let cube root of 125 equal to x okay that implied x cube equal to what 125 that implied x cube equal to 125 means this is 5 row cube that implied x cube by 5 row cube equal to 1 that implied x by 5 row whole cube equal to 1 do you understand that implied x by 5 equal to cube root of 1 and you know cube root of 1 equal to 1 into omega comma omega square so x by 5 equal to this one that implied x equal to what x equal to 5 then 5 omega and 5 omega square okay therefore cube root of 1 therefore cube root of 125 equal to 5 one is 5 omega and other is 5 omega square okay or you can directly write this one cube root of 27 number 2 cube root of minus 27 means so you can write cube root of 27 cube root of minus 27 into cube root of 1 देखो किसी ना वैल्यू 1 अच्छी ना नहीं है
So into 1 है ना minus 27 into 1 and you can write minus 27 cube root into cube root of 1. So cube root of minus 27 means minus 27 per 1/3 and this is minus 3 into 1 omega into omega square okay, and this is minus 3 minus 3 omega and minus 3 omega square okay. So cube root of minus 27 equal to minus 3 omega minus 3 omega square. Next number 3 cube root of 5. So cube root of 5 means you can write also cube root of 5 into 1 and this is cube root of 5 into cube root of 1 alla. So cube root of 5 there is no number okay, and cube root of 1 means 1 into omega square. जेहेतु एटार भैल्यू आम कहीपर ना एमती माइनस 27 थी तुम डायरेक्ट माइनस 3 लिख 125 थी 5 लिख सो क्यू थर्ड ऑफ 5 मैंने रिमेनिंग सेम रहा सो क्यू थर्ड ऑफ 5 देन क्यू थर्ड ऑफ 5 ओमेगा देन क्यू थर्ड ऑफ 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर सो क्यू थर्ड ऑफ 5 इक्वल टू 5 to the 1/3 5 to the 1/3 into omega 5 to the 1/3 into omega square okay. So in this way you have to find this cube root of any complex number any number okay. Next we do some another problem using cube root of okay cube roots of unity, that is if omega is a cube roots of unity then find the value of 1 plus omega minus omega square to the power 7 okay. First we find its value answer 1. Omega is a cube roots of unity means you know 1 plus omega square equal to 0, that means 1 plus omega equal to minus omega square and 1 plus omega square equal to minus omega and omega cube omega to the power 3n equal to 1 okay. So 1 plus omega minus omega square equal to the power 7 अच्छी तो 1 plus omega means what minus omega square तो minus omega square equal to the power 7 and this is minus 2 omega square to the power 7 है तो minus 2 to the power 7 this is minus 2 to the power 7 into omega square to the power 7 means omega to the power 14 तो minus 2 to the power 7 means minus 2 to the power 7 तो 2 to the power 7 means you know 2 to the power 6 equal to 64 into 2 क्या होची 128 तो माइनस 128 इंटू ओमेगा टू पावर 14 ओमेगार पावर अच्छी माने यू हैव टू डिवाइड 3 सो 3 4 जा 3 इंटू 4 12 प्लस 2 है एंड दिस इज माइनस 128 इंटू ओमेगार पावर 3 इंटू 4 ओमेगार पावर 3 इंटू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर सो 3 इंटू 4 मीन्स 1 पावर 4 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस माइनस 128 इंटू ओमेगा स्क्वायर. Its value is minus 128 into omega square okay. Next omega square value substitute करिया किसी आवश्यक नहीं एति रही आंसर टा ओके. नेक्स्ट नंबर 2 देखो नंबर 2 आंसर 3 plus 3 omega plus 5 omega square to the power 6 3 plus 3 omega plus 5 omega square to the power 6 you can break in this way. So 3 plus 3 omega 5 omega टाइप कौन लिखे 5 omega square टाइप 3 omega square plus 2 omega square okay to the power 6 and take it common 3 तीन टा टर्म रू 3 टा कॉमन कर ले 1 plus omega square plus 2 omega square whole to the power 6 है and you know 1 plus omega square equal to 0 and this is 0 so 3 into 0 0 yes your 2 to the power 6 into omega to the power 12 है so 2 to the power 6 means 64 नहीं 2 to the power 6 means 64 into omega to the power 12 तो omega to the power 12 means 3 into 4 है so this is 1 and this is equal to 64 है similarly 2 plus 6 omega plus 2 omega square also number 3 answer 2 plus 6 omega plus 2 omega square क्यों
ओके दिस इज 2 प्लस 6 ओमेगा कौन कर ब्रेक करियो 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर क्यू ओके एंड 2 इट कॉमन 2 ए दुटा टर्म रो तीन टर्म 2टा जब आम कॉमन नेबा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा होल पावर क्यू ओके but 1 plus omega square equal to 0 this one 0 into 2 0 so 4q into omega q so 4q means 64 into omega q equal to 1 this is also 64 okay so its value is 64 this one is also 64 next number 4 ta dekho calculate 4 number ta hochi 1 minus omega plus omega square to the power 5 plus 1 plus omega minus omega square to the 5 you know 1 plus omega equal to what minus 1 plus omega square equal to minus omega because 1 plus omega square equal to 0 this is the property 1 plus omega square equal to 0 so 1 plus omega square hala 1 plus omega it is called 1 minus omega plus omega square to the power 5 plus 1 plus omega minus omega square to the power 5. So 1 plus omega square equal to minus omega the power 5 plus 1 plus omega square means minus omega square then minus omega square to the 5. So minus 2 omega to the 5 plus minus omega square so minus 2 omega square to the power 5 and this is minus 2 omega to the power 5 means minus 2 to the power 5 equal to minus 32 into omega to the power 5 here minus 2 to the power 5 means minus 32 into omega to the power what 10 so minus 32 take it common omega to the power 5 plus omega to the power 10 so omega to the power 5 means 3 रे डिवाइड करियो ना 3 1 जा 3 1 रोइल 2 रोइला so remainder 2 means omega square होबो so minus 32 then this is omega square होबो ना नहीं आ omega to the 10 means 3 डिवाइड करो 3 3 जा 9 remainder 1 हला omega तो omega square plus omega हला अच्छा minus 32 and this is minus 32 omega plus omega square plus omega means minus 1 and this is 32 okay so 1 plus omega 1 minus omega plus omega square to the power 5 plus 1 plus omega minus omega square to the power 5 equal to 32 okay its value is 32 next last one its value to calculate this is 32 okay next so 5 number देखो 5 number कौन अच्छी 2 minus omega into 2 minus omega square into 2 minus omega to the power 10 into 2 minus omega to the power 11. Here first we express the higher power of omega into lower power. है higher power टाको तुम कौन करियो lower power रे convert करियो by dividing 3 omega रो power टा जेते हेले मध्य तुम ताको कौन करियो जे 3 रे डिवाइड करियो हला रिमाइंडर टा 1 हेले ओमेगा पकेबो रिमाइंडर टा 2 हेले ओमेगा स्क्वायर पड़ियो और रिमाइंडर टा 0 हेले 1 पड़ियो ना नहीं अच्छा you can express in this way so answer 5 this is 2 minus omega into 2 minus omega square 2 minus omega to the 10 means omega the remainder 1 hobo 2 minus omega to the 11 माने remainder 2 hobo remainder 2 बोले कौन होची omega square है तो 2 minus omega into 2 minus omega 2 minus omega रो whole square है here 2 minus omega square here also 2 minus omega square this is 2 minus omega square whole square है then 2 minus omega into 2 minus omega square रो whole square है now multiply this one 2 2 जा 4 है minus 2 omega square minus 2 omega plus omega cube रो whole square है okay so here 4 omega cube means 1 है 4 minus 2 टी कॉमन है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है रो होल स्क्वायर है
Okay, so this one 4 minus 2 into omega square plus omega, this is minus 1 plus 1 the whole square, and this is 4 plus 2, 4 plus 2 plus 1 the whole square. Okay, so 4 plus 2 plus 1 whole square, so 7 the square, and this is equal to 49. So its value is 49. Okay, do you understand? So in this way you have to calculate its value in term of omega. Next we do another problem also, that is if x equal to a plus b, comma y equal to a omega plus b omega square, and z equal to a omega square plus b omega, then show that x y z equal to a q plus b q, number 1. Number 2, x q plus y q plus z q equal to 3 into x q plus y q plus z q minus 3xyz equal to 3 into a q plus b q. Okay. Now we prove this one answer. Proof of 1, LHS x y z, its value substitute. X means a plus b, y a omega plus b omega square, and substitute the value of z, a omega square plus b omega. Okay. Now multiplying this one, first the term eta a plus b remaining rakho. Now multiply second and third term, a omega, this is a square omega q, then ab omega square plus ab omega square, then b omega square को a omega square multiply कले कौन होची ab omega fourth plus b square omega q, b square omega q. Okay, so a plus b into a square omega q means 1 plus ab omega square plus ab omega fourth means omega, because 3 रे divide कले कौन होची remainder 1 means omega, plus b square omega q is also 1. Okay, and this is a plus b into a square plus b square plus ab common नियो omega square plus omega है ना, नहीं कि अच्छा, then a plus b into a square plus b square omega ab into omega square plus omega means minus 1. Okay, and this is a plus b into a square minus ab plus b square, a plus b into a square minus ab plus b square, this is formula for aq plus bq. aq plus bq, you know aq plus bq factorization formula, a plus b into a square minus ab plus b square. Okay, second one देखो, second टाइम प्रूफ करिया, प्रूफ ऑफ 2. So 2 टा प्रूफ करिया गले हमको कौन ना पड़े LHS ने भी. अच्छा, now proof of 2, we take the LHS part. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x cube means a plus b whole cube, y cube means a omega plus b omega square whole cube, plus z cube means a omega square plus b omega whole cube minus 3xyz minus 3x means okay minus 3xyz, so minus a plus b. Now x cube plus y cube plus z cube, not minus 3xyz only. This is x cube plus y cube plus z cube. Okay, so there is a mistake in question number 2. Question number 2 will be x cube plus y cube plus z cube equal to 3 into a cube plus b cube plus c cube minus 3xyz. Not एटा रहिबो नाही है ना. So a cube plus b cube plus x cube means a plus b whole cube, y cube means a omega plus b omega square whole cube, z cube means a omega square plus b omega whole cube. This is not necessary. Not necessary. Okay. Now use the formula a plus b whole cube, a cube
plus 3a square b plus 3ab square plus bq. Here also use the formula a plus b whole cube. aq plus 3a square b, 3a b square plus 3a square b, b means b omega square, plus 3ab square, 3a, a means a omega, 3a b square, so b square means b into omega square whole square, okay, plus bq plus bq omega 6th, okay, bq omega 6th, okay, plus here a plus b whole cube, aq means a square omega to the power 6 aq plus 3a square b plus 3a square a omega square 3a square b, b means, okay, b means b omega plus 3a b square b omega 3a b square plus bq omega q, okay, bq omega q, okay. Now this is aq plus 3a square b plus 3ab square plus bq plus aq omega q plus ये क्या होची 3a square omega square है 3 एटा कौन होची a square omega square है ना कि अच्छा 3a square omega square से तमें मल्टीप्लाई कले कौन होची 3a square b omega square into omega square, this is omega 4th है plus 3 into a omega एटा कौन होची b omega square means कौन होना b square omega 4th है b square omega 4th है ना अच्छा b square omega 4th तो मल्टीप्लाई कले कौन होची 3ab square omega into omega 4th है omega into omega 4th means this is omega 5th है okay, plus bq omega 6th है omega 6th है plus aq omega 6th plus 3 एटा कौन होची a omega square means a square omega 4th है एटा कौन हो 3a square b omega 5th है omega 5th है plus 3 एटा कौन होची omega square into b square into omega square है अच्छा एटा कौन होची 3ab square omega square into omega square means omega 4th है plus bq omega q, okay. अच्छा बर्तमान हायर पावर टाको आम लोअर पावर कन्वर्ट करिया एंड दिस इज aq plus 3a square b plus 3ab square plus bq plus omega q means 1 aq plus 3a square b omega because omega 4th होची omega plus 3ab omega square omega 5th means what omega square plus bq omega 6th means 1 plus aq because omega 6th is 1 plus 3a square b 3a square b omega 5th means what omega square omega 5th means omega square, okay, plus हला plus 3a square b एटा होची ओमेगा स्क्वायर हला plus 3ab square ओमेगा 4th माने ओमेगा plus bq ओके देखो एडी अछि aq then again aq so aq plus aq then this is 3aq then 8bq अछि here bq plus 3bq plus देखो 3a square b अच्छा ये 3a square b अच्छी आउ गोटे देखो 3a square b हला अले 3a square b हला so if we take a 3a square b common 1 plus omega square plus 3ab square common कर दियो 3ab square common ले 8 कौन ले डबल
3ab square then 3ab square ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖ 3ab square 3ab square ଏଠି अच्छा एडी कौन हम कहल 3ab square सो 3ab square एडी गोटे अच्छी ना कि 3ab square ये जो गोटे टर्म रहा यहाँ कौन हम कहल 3a square b 3ab square हम ये देख यहाँ कौ टर्म यहाँ कहल यहाँ के नंबर टर्मटा 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म देख 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन अच्छी 3ab square अच्छी आम लिखीचे 3ab लिखी 3ab square है सो 3ab square कमन ना ये अच्छी 3ab square एड भी 3ab square अच्छी एड भी 3ab square है तो 3ab square टा कमन ना ये 1 रहा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड दिस इज 0 this one is 0 that implies 3 into a square plus b square 3aq plus 3bq and this is 3 into aq plus bq okay so in this way you have to prove this complete. Next we do some other. If 1 omega omega square are cube roots of unity then prove that 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega fourth into 1 minus omega fourth plus omega to the power 8 dot 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 2n factors. Here how many factors? 2n factors. This is the one factor, second factor, third factor. एमती केतरा factor अच्छी 2n दा factor अच्छी है ना. So 2n factor टा को multiply करें you will get 4 to the power n. Proof of 1. Answer 1. Okay. Proof of 1. LHS part number 1 LHS 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega fourth into 1 minus omega fourth plus omega to the power 8 into dot 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 up to 2n factors. How many factors are there? 2n factors. Okay. अच्छा फर्स्ट फैक्टर वैल्यू केते आसी देखो फर्स्ट फैक्टर कौन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माने कौन माइनस ओमेगा हियर माइनस ओमेगा ओके अच्छा ये कौन अच्छी 1 प्लस ओमेगा फोर्थ है अच्छा 1 प्लस ओमेगा फोर्थ माने कौन 1 ओमेगा फोर्थ माने कौन है ओमेगा ओमेगा फोर्थ माने कौन बुझ ओमेगा बुझ हेले 1 प्लस ओमेगा माने कौन माइनस ओमेगा स्क्वायर बुझे ना इंटू देख यहाँ कौन हो ओमेगा फोर्थ माने कौन हम ओमेगा ओमेगा टू द पावर 8 माने कौन हो ओमेगा स्क्वायर है ना कि ओमेगा फोर्थ 3 डिवाइड कले रिमाइंडर 1 है ओमेगा है रिमाइंडर 2 है रिमाइंडर 2 है कौन ओमेगा स्क्वायर हेले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माने कौन माइनस ओमेगा ये माइनस ओमेगा अच्छी है डट 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 अप टू 2n फैक्टर्स एमती 2n फैक्टर अच्छी है हेले माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा के माइनस 2 ओमेगा हम ना ना कह यहाँ के माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है तापर के माइनस 2 ओमेगा हम देख केमती है माइनस 2 ओमेगा है माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है देन माइनस 2 ओमेगा देन नेक्स्ट टर्म मस्ट बी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हम डू यू अंडरस्टैंड माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हम तापर टर्मटा माइनस 2 ओमेगा तापर टर्मटा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एमती आसो है डट डट 2n फैक्टर डू यू अंडरस्टैंड देख मुझे कौन करी कहल ए दुटा टर्म मल्टीप्लाई करी ए दुटा टर्म मल्टीप्लाई कर लिखी तो माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माने कौन माइनस 2 4 है यहाँ कौन अच्छे ओमेगा क्यू है ओमेगा क्यू ए दुटा मल्टीप्लाई कले कौन हो 4 ओमेगा क्यू है हेल्ले तापर टर्म में कौन थी माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर थी तो आपको मल्टीप्लाई कले कौन हम 4 ओमेगा क्यू हम इंटू 4 ओमेगा क्यू आसो इंटू डट 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 दुटा टर्म को आम मल्टीप्लाई कले दुटा टर्म मल्टीप्लाई कले 2n जो फैक्टर थिला डबल फैक्टर को मल्टीप्लाई करी आम प्रोडक्ट टाइप लिखिले ना नहीं सो हियर हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ना n फैक्टर हम कौन हम n फैक्टर हम है डबल कर जो लिखिले से अधा कटि जाऊँगी तो दिस इज n फैक्टर्स है ये 2n फैक्टर थिला ये बर्तमान कौन है n फैक्टर है केमती ना दुटा को मल्टीप्लाई कले ए दुटा मल्टीप्लाई कले ए दुटा मल्टीप्लाई कर लिखिले तो ओमेगा क्यू दिस इज ऑल्सो 1 दैट इम्प्लाइड 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डट 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 n फैक्टर्स तो 4 टा को n मल्टीप्लाई कले कौन हम 4 टू द पावर n एंड दिस इज RHS ओके
So proof is completed. Next, number 2. If 1 omega square are the cube roots of unity, then what is value a plus b omega plus c omega square by c plus a omega plus b omega square value कहते plus यार value कहते देखो ये कौन करिया मैं देखो ये एडजस्टमेंट करिया केमती डिनोमिनेटर पार्ट टाको देखिए न्यूमरेटर एडजस्ट करो तलटा देखिए ऊपर एडजस्ट करो किंबा न्यूमरेटर देखिए तुम डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट करो आम कौन करिया ये न्यूमरेटर एडजस्टमेंट करिया ये कौन अच्छे देख तले कौन अच्छे सी अच्छी ए ओमेगा अच्छी ए ओमेगा स्क्वायर अच्छी ये सी अच्छी ना उपरटा को आमको सी आनिया पड़ो तो सी आनिया गले कौन करार अच्छी ना ऊपर मल्टीप्लाई करिया ओमेगा मल्टीप्लाई करिया सो ये ओमेगा मल्टीप्लाई करियो मीन्स डिनोमिनेटर भी ओमेगा मल्टीप्लाई करियो एमती कराहब ये कौन अच्छी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अच्छी ये बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर अच्छी आम डिनोमिनेटर देखिए एडजस्टमेंट करिया एडजस्टमेंट कले ये कौन अच्छी बी अच्छी ना ये कौन अच्छी कहल बी ओमेगा अच्छी गोटे टर्म देखिए एडजस्ट कर ये बी अच्छी ना ये बी ओमेगा स्क्वायर अच्छी सो ये कौन कले बी हम यहाँ कौन कले बी हम माने बी ओमेगा अच्छी ना ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कर ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कौन ओमेगा क्यू एल 1 हो तो ये आम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करिया ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करिया किंतु फास्ट टर्म आम ये जेहतु सी अच्छी यहाँ सी आनिया पड़ो तो ओमेगा स्क्वायर अच्छी ओमेगा क्यू हेले यहाँ 1 हम तेणु ये ओमेगा मल्टीप्लाई करिया है सो इन नंबर 2 देख here we express numerator in term of denominator देखिए तुम्हें numerator रे adjust करछ तुम्हें एमती भी कर पारियो you can do express denominator in term of numerator okay anyone answer देखो answer 2 एडी कौन कले a अच्छी एडी c ओमेगा स्क्वायर अच्छी ना c अच्छी मत c एडी ओमेगा मल्टीप्लाई कर तो ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई एडी ओमेगा इंटू एडी बी ओमेगा मल्टीप्लाई करिया सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ओके प्लस एडी कौन करिया देख लो एडी सी ओमेगा स्क्वायर कौन बी अच्छी बी ओमेगा अच्छी ना है ना ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दियो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करले ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हेल्ले ये कौन कर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए भितर सो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यू बाय ओमेगा इंटू यहाँ जेमस ये मल्टीप्लाई करियोनी सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ओके बर्तमान कह ए ओमेगा स्क्वायर भीतर मल्टीप्लाई कर दियो सो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यू प्लस सी ओमेगा क्यू सी ओमेगा फोर्थ है सी ओमेगा फोर्थ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यू प्लस सी ओमेगा फोर्थ बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू एटा जेमस रही बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ओके अच्छा सी ओमेगा क्यू माने कौन सी है तो यहाँ कौन है कहल ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी है प्लस सी ना नहीं है सी बाई ओमेगा इंटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ओके एमती रहा है अच्छा प्लस यहाँ कौन अच्छी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यू माने ओमेगा क्यू माने 1 बी हम प्लस सी ओमेगा फोर्थ माने ओमेगा हम बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है अच्छा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी एडी भी अच्छी सी प्लस ए ओमेगा ए टर्मटा कैंसल है एडी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा एडी कैंसल है सो ये कौन रहा ऊपर 1 बाय ओमेगा रहा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर है तो 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर लॉस होने जो ओमेगा स्क्वायर है ये कौन अच्छी ओमेगा कटला ओमेगा कोट रहा प्लस 1 है किंतु 1 प्लस ओमेगा इक्वल कौन माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर cancel and this is a -1 so its value is a -1 okay in this way you have to calculate third number टा जंदी अछि सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिवो हला you will get the required answer a plus b omega plus c omega square into a plus b omega square into c omega now multiply this one directly देखो पहले आपको जब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिया कौन हम a इंटू ए स्क्वायर
plus AB omega square plus AC omega. Then we multiply B omega. So this is AB omega, AB omega plus B square omega Q, B square omega Q कहीं omega into omega square omega Q है B square omega Q plus BC omega square plus BC omega square plus तापर C omega square को AC omega square है AC omega square है plus BC omega fourth plus BC omega fourth है plus C square omega Q plus C square omega Q. Okay, now here A square plus AB omega square plus AC omega plus AB omega B square omega Q is 1 plus BC omega plus AC omega square plus AC omega square BC omega 4 those omega. Okay, and C square omega Q is 1. Okay, now A square plus B square plus C square plus AB common it is omega square plus omega A zero common how BC देखो plus BC common BC common BC common कौन रहा omega square plus omega plus AC common कौन होची AC common नेबा AC कौन ए जो ए दिरा term AC common omega plus omega square omega plus omega square. Okay, you know omega 1 plus omega square equal to 0, that is A square plus B square plus C square. Omega square plus omega means minus 1, so minus AB minus BC, this is also minus 1, एटा होची कोन minus 1 हबो, एटा कोन हबो minus 1 हबो, एटा कोन हबो minus 1 हबो, तो minus AB minus BC minus CA. So A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA, this is known as A plus B omega plus C omega square plus A omega square plus B A plus B omega square plus C omega. Okay, this one is a important note also. Therefore, A square plus B square, remember this point, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. We can express in term of 1 omega omega square. Its value is A plus देखो B omega plus C omega square. तीनटा नंबर A B C A लिखिलो 1 तापटा ओमेगा स्क्वायर बर्तमान A दिरा इंटरचेंज करियो ओमेगा स्क्वायर A प्लस एटी कौन लिखिलो B ओमेगा रखिथिलो ना एबे कौन रखियो ओमेगा स्क्वायर रखियो B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा. ओके, you can remember easily A plus B omega plus C omega square into A plus B omega square plus C omega. Okay, so this value, the product of these two number, you will get A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. Okay, now you do some problems yourself. This is the homework question, some question for yourself. This is the question for yourself. Prove that alpha to the power 4 plus beta to the power 4 plus alpha to the minus 1 into beta to the minus 1 equal to 0, where alpha and beta are complex roots of unity. Number 2, prove that A plus B plus C into A plus B plus B omega plus C omega square into A plus B omega square plus C omega equal to A square plus B AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC. If x equal to A plus B, y equal to A omega plus B omega square plus z equal to A omega square plus B omega, then prove that x square plus y square plus z square equal to 6ab. 4. Solve x minus 1 whole cube plus 8 equal to 0. 5. Find least positive integral value of n for which 1 plus I to the power n by 1 minus I to the power n minus 2 is a real. If alpha and beta are roots of x square plus x plus 1 equal to 0, then find alpha square plus beta square. If 1 plus I ro modulus ro power x equal to 2, then write the value of x. 8. 1 minus I by 1 plus I to the power 500 equal to A plus IB. Then A equal to dash, B equal to dash. 1 minus I by 1 plus I को first complex number form आनियो रो power 500 सेडू A केते B केते determine करियो. 9. If z equal to 1 plus I by 1 minus I, then find z fourth. Okay. In next class we do different form of the complex number.
You can do this problem, and also in element test book there are the problems of using omega square and 1. Okay, so you can do all this problem in complex number first exercise. Thank you.